Assalamu alaikum and welcome back to the channel. This is Ramiz and you're watching my lecture series. I hope my all students are doing good by the grace of God. In today's session, we are going to talk about the second last poem of class 8 English book. And today's poem is Stars Speak to Man, which is written by Abdul Azad. Before we go on to describe the meaning, let us briefly talk about who was Abdul Azad. He was born in 1903 and he died on 1948. That means he was about 45 years approximately, right? And he died at the age of 45. He was from Badgam district and he was referred to as Keats of Kashmir. Keats was one of the greatest writer in English language. Okay, so this man Abdul Azad was known as the Keats of Kashmir, right? And Keats of Kashmir, that means Abdul Azad, he was influenced by Rasul Mir and Mahmud Gami. These were the two, you can say, the pioneers of Kashmiri literature. Now, Abdul Azad actually has written this poem in Kashmiri language, right? And later on, this Kashmiri version or this Kashmiri poem is translated by Professor G.R. Malik. Professor G.R. Malik. He translated this Kashmiri version into English and he named it as Stars Speak to Man, right? And I have decided today to read out the actual original poem in front of you so that our imagination is apt, our grasping power is apt, right? So let's begin with the Kashmiri version of this poem, as I have struggled a lot in order to pronounce the Kashmiri words correctly. So let's begin. So Osu Gat Jaruk Noor Chalogut Nar Insano Karat Insaniyat Badnaam Habeyar Insano Mohabbat Bergeravun Kyut Karyonak Kwadratan Pada Chalogut Dino Imanas Karun Bapar Insano Thavyone Kwadratan Panyan Khazanan Than Mutsravit Che Osi Bergeravit Kyun Banyok Shahmar Insano Kuni Alam Kuni Adam Namas Sith Maz Mazas Nam Ye Kamitravi Dilas Andar Duhei Hind Nar Insano Banyok Darmuk Te Dinuk Tham Te Dinuk Gam Na Dinuk Gam Na Darmuk Gam Karan Insaniyat Matam Bachit Chain Kar Insano Paza Diyun Sina Insanas Tithis Dinas Te Imanas Karan Kunirus Ne Yaksanas Chu Yus Doginyar Insano Kurut Fitnatan Fasadan Nav Deendari Watandari Vanan Yath Chukts Bedari Yichu Khumar Insano Ditui Brahm Panyo Karau Divan Chuk Kismatik Barau Taran Chuk Pranivi Tarau Lagi Kaitatar Insano Dilas Maz Izteraba Chui Hubaban Hund Hijaba Chui Yisori Yisori Mute Khaba Chui Sagats Bedar Insano Jigar Parant Gam Kharan Rafikan Dostan Yaran Jigar Kit Pert Katravan Chuk Khun Khar Insano Divan Chuk Pannasi Bagas Divan Chuk Pannasi Bagas Samulan Drot Patran Sag Garas Pannis Chuk Panai Karan Lurpar Insano Duti Havit Azadan Chukya Insan Sundadan Sinai Kanthav Hasnadan Gaban Chui Bar Insano. Now this is, I can feel the emotions when you read out the Kashmiri version of this poem. Now let's talk about, we are here, we are concerned with the English language, so let's deal with the English text itself.
You were the light of reason. Now Abdul Azad says, You were the light of reason. तुम क्या थे? तुम, अल्लाह ने तुम्हें बनाया था एक ऐसा इंसान जिसके अंदर रीज़न दिया था अल्लाह ने, जिसके अंदर पावर ऑफ थिंकिंग दी थी अल्लाह ने, जिसके अंदर अल्लाह ने माइंड दिया था, ठीक है, आपके पास रीज़न दिया था अल्लाह ने. बट यू चोज टू बी फायर, ओ मैन. लेकिन तुमने क्या सिलेक्ट किया? तुमने अपने आप को आग बना डाला. ओके, आप नूर थे, आप नार बन गए, आप आग बन गए, ठीक है. यू वर गिवन द पावर ऑफ थिंकिंग, यू वर गिवन द पावर ऑफ रीज़न, बट सी हाउ यू हैव chosen yourself. अपने आप को क्या बनाया तुमने? ओ मैन, है इंसान, तुमने क्या किया अपने आप को? You put humanity to disgrace. How careless of you, oh man. तुमने इंसानियत को जलीलो खार किया. You have put humanity to disgrace. Okay, you have dishonored everyone. Humanity itself. How careless of you. तुम कितने जालिम हो. Careless here means जालिम. Remember these words. Wait a minute. Callous means जालिम. Oh man, तुम कितने जालिम बन गए. Nature had fashioned you to apportion love and affection. कुदरत ने तुम्हें बनाया था प्यार करने के लिए, राइट, affection देने के लिए, एक दूसरे के साथ लगाव करने के लिए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटने के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया था, राइट. यानी you were sent to this world in order to distribute love and affection. But see what have you made yourself. But you took to buying and selling religion and faith instead. But तुमने क्या किया? तुमने अपने ईमान को, अपने मजहब को बेच डाला. ठीक? Here, wait a minute. Here, religion and faith. Religion means mazhab and faith means अकीदा. ओके, तो ये इनको कहता है कि अल्लाह ने तुम्हें प्यार करने के लिए भेजा था, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए दुनिया में भेजा था ताकि तुम डिस्ट्रीब्यूट करो लव, ठीक. बट यू टुक टू बाइंग एंड सेलिंग रिलीजन. तुमने क्या किया? तुमने मजहब को ही बेच डाला, तुमने अकीदे को ही ख़त्म कर डाला. नेचर हैड थ्रोन ओपन ऑल इट्स ट्रेजर्स टू यू. कुदरत ने तुम्हें हर एक खजाने दिए थे, ठीक है. एवरीथिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द जाइंट एनिमल्स टू द जाइंट क्रिएचर्स, एवरीथिंग वाज अंडर यू. हर कोई चीज़ अल्लाह ने तुम्हें दी थी. यू हैड टू शेयर देम इक्विटेबली. अल्लाह ने क्या चाहा था? कि तुम उन सब चीज़ों को इक्वली शेयर करो हर एक के साथ. आप हर एक को अपना फेयर, यू विल डू द जस्टिस. ओके, you'll be just. आप फेयर करोगे सबके साथ, आपको जो मिला है वो आप दूसरों को दे दोगे. बट यू sat serpent like on them. लेकिन instead of giving equitably, what you did, you sat on all the things you have received from God, all the bounties you have received from God. आप उस पर क्या बैठे? You are acting like a python, right? You are acting like a serpent. जिसे कश्मीरी में, जो कश्मीरी वर्जन है अभी जो हमने यहाँ पे पढ़ा, उसमें क्या लिखा है कि शाहमार, राइट. सो यू आर लाइक you have become like a serpent. Okay, you are not distributing anything to the other human beings. You are not distributing love and affection to them. Okay, you are not giving what you have already. One world, one mankind, as close to one another as the nail to the flesh. Flesh हम कहते हैं किसको? गोश्त को, इंसान के ऊपर, जो इंसान की बॉडी पे जो होता है. तो द पोएट सेज दैट देयर इज वन वर्ल्ड, देयर इज वन मैनकाइंड. एक ही दुनिया है, एक ही इंसानियत है. वी आर सो क्लोज टुगेदर, ओके, जस्ट लाइक नेल, राइट, विद द फ्लश. जैसे हमारे नाखून फ्लश के साथ नज़दीक होते हैं ना, वैसे ही हम इंसानों के साथ नज़दीक हैं. वैसे ही हम अल्लाह ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है, राइट. वी आर सो क्लोज कि अल्लाह जैसे नाखून और गोश्त, नाखून और फ्लश जैसे एक साथ होते हैं ना, उतनी दूर हम हैं. दैट मीन्स वी आर क्लोजली कनेक्टेड, राइट.
Who then ignited the fire of division and duality in your mind? Now this is a question. The writer is confused, bewildered. क्योंकि वो कह रहा है कि ये किसने तुम्हारे अंदर पैदा की है, किसने तुम्हारे अंदर जगाई है या जलाई है, क्या? द फायर ऑफ डिवीजन. तुम्हें किसने अलग अलग किया दुनिया में? ड्युअलिटी कहाँ से आ गई आप इंसानों में, राइट? तुम कैसे जुदा हो गए? तुमने कैसे एक दूसरे के साथ नफरत करना स्टार्ट करी? ठीक है. हाउ दिस ड्युअलिटी केम इनटू द वर्ल्ड. ओके, हाउ हैव यू स्टार्टेड टू हेट ईच अदर्स? Okay, this is not fair. You have been born, you have been given the existence in order to love, in order to show pity and mercy to the other beings, right? You supposed to be the pillar. Okay, you were supposed to be the pillar of religion. आपको अल्लाह ने इसलिए पैदा किया था ताकि आप मजहब के एक पिलर बन जाओ. You were supposed to be like that. And dharma, अकीदा, यानी खुदा ने तुम्हें पैदा किया था किस लिए? ताकि तुम मजहब के पिलर बन जाओ, मजहब धर्म के आप पिलर बन जाओ, विदाउट केयरिंग द लीस्ट फॉर ईदर. लेकिन तुमने क्या किया? तुम दोनों के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हो. यू आर नॉट बिकमिंग रिलीजियस. ओके, यू आर नॉट थिंकिंग ऑफ दोज थिंग्स विच गॉड हैव गिवन टू यू, द बाउंटीज, राइट? एवरीथिंग गॉड हैज गिवन यू. तुम सारा कुछ बुला बैठे हो. तुमने मजहब को बेच डाला, तुमने अकीदों को बेच डाला, ठीक? तुमने किसी का केयर नहीं किया. यू डोंट हैव केयर ऑफ रिलीजन, यू डोंट केयर अबाउट धर्मा, राइट? यू वर सपोज टू बी द पिलर ऑफ रिलीजन, बट लेकिन आपने सारा कुछ खत्म किया, राइट? आपने ड्युअलिटी लगाई, आपने डबल स्टैंडर्ड्स लगाए. यू हैव शोन डिसऑनेस्टी टू द पीपल, राइट? यू हैव नॉट बीन जस्ट टू द पीपल, यू हैव शोन द इम्पार्शियलिटी, राइट? सो जो पाथ अल्लाह ताला ने दिया था ना आपको, आप उससे नीचे क्यों आ गए, राइट? सो हियर दिस इज द क्वेश्चन. द राइटर इज वेरी कंफ्यूज्ड. व्हाई हैव मैन बिकम सो लाइक दैट, राइट? नाउ, लीस्ट फॉर ईदर, सीइंग योर शेमफुल डीड्स. तुम्हारे इन गंदी हरकतों को, इन बेफजूल हरकतों को देखकर ह्यूमैनिटी हैज फॉलन इनटू लेमेंट. पूरी इंसानियत तुम पे मातम कर रही है. तुम जो बन चुके हो, राइट, उस पर पूरी इंसानियत तुम पर मातम कर रही है. तुम्हें क्या हो गया है? सीइंग योर शेमफुल डीड्स, सीइंग योर शेमफुल एक्शंस, व्हाट यू आर डूइंग हियर इन द वर्ल्ड. You know, humanity itself has fallen into the lament. They are mourning for you, right? They are weeping for you, for your status, right? What have you become? And what you were supposed to be. आपको क्या हो गया है? Now, should mankind ever own and profess a religion and faith which perverts the essential unity of man into division and disorder? Now again, the poet is asking us a question, says that क्या इंसान को ऐसा रिलीजन मानना चाहिए? क्या उसको ऐसा रिलीजन एक्सेप्ट करना चाहिए जो रिलीजन और जो फेथ आपको क्या बनाएगा? आपको किसकी तालीम देगा? डिवीजन की और डिसऑर्डर की, जो कि यूनिटी को, इसेंशियल यूनिटी को खत्म करेगा. ऐसा कोई दुनिया में मजहब ही नहीं है जो आपको करप्ट करेगा, डिबेस करेगा, राइट? तो ये बोलता है क्या इंसान को ऐसा मजहब अपनाना चाहिए जिसमें कि ये कहा गया हो कि आप यूनिटी को ब्रेक करो, आप डिवीजन लाओ सोसाइटी में, आप डिसऑर्डर लाओ सोसाइटी में? ऐसा कोई भी रिलीजन नहीं है, ऐसा कोई भी अकीदा नहीं है. सो वट एवर मैन हैज कम विद, okay, he has done this by his own self. Okay, he has debased himself, he has corrupted himself, he has created disorder in the society, and no religion in the world says this. No religion in the world supports disorder, division or disunity, right? तो ऐसा कोई मजहब ही नहीं है कि इंसान को उस अकीदे के पीछे चलना चाहिए जहां पे इंसानों को डिवाइड करना सिखाएंगे, डिसऑर्डर सिखाएंगे. नो, टू मिसचीफ, बुराई एंड डिसरप्शन. तुमने डिसरप्शन मीन्स डिसऑर्डर, ओके? तुमने डिसऑर्डर और बुराई का नाम रखा. यू हैव गिवन द नेम ऑफ रिलीजन एंड पेट्रियटिज्म. तुमने डिसऑर्डर और मिसचीफ को नाम दिया मजहब और पेट्रियटिज्म. पेट्रियटिज्म मीन्स हुब्बुल वतनी,
हुब्बुल वतनी मीन्स व्हेन समवन लव्स हिज कंट्री. ओके, तो तुमने पेट्रियटिज्म का नाम, तुमने रिलीजन का नाम क्या रखा? डिसरप्शन एंड मिसचीफ. ओके, जो आपके मेन डिजायर्स थे इन ऑर्डर टू अचीव ऑल दोज थिंग्स इन योर लाइफ, यू हैव गिवन देम द नेम ऑफ रिलीजन एंड पेट्रियटिज्म. You are creating disorder, and you are just preaching the society, you are preaching the people that this is religion. Okay, this is something which religion says us. No, you're saying them this is patriotism. Okay, you're hating each other on the name of this patriotism. Okay, you're hating other people because they are not from the same religion. Okay, no religion in the world teaches us that. We all are human beings. We have to love each and every humans. Even we have to love animals also, right? That which you call awakening, तुम जिसे बेदारी कहते हो ना, तुम जिसे awakening कहते हो, that is actually a stupefying hangover. Okay, that's actually a dead thing. Okay, that is actually a dull thing, a stupefying hangover, right? तो ये एक ऐसी चीज है जो hangover means unpleasant thing. ठीक है, जिसके इफेक्ट्स जो होंगे बुरे होंगे. सो स्टूपिफाइंग इज डल, लेजी, समथिंग काइंड ऑफ नॉन एक्टिव, राइट? सो ये कहते हैं कि जिसे आप बेदारी कहते हो ना, दैट इज एक्चुअली व्हाट? दैट्स एक्चुअली एक्सटेसी. दैट्स एक्चुअली यू आर इन द काइंड ऑफ, यू आर इन द लेजी स्टेट, राइट? यू आर एक्चुअली यू आर इन स्लम्बर, यू आर इन डीप स्लीप. लेकिन तुम जिसे बेदारी कहते हो ना, वो असल में तुम पता नहीं कहाँ खोए हुए हो. योर ओन मिसडीड्स हैव डिल्यूटेड यू. तुम्हारे जो अपनी एक्शंस है ना, मिसडीड्स हैं, जो भी तुम अपने एक्शंस करते हो, अपने काम करते हो ना, गलत काम करते हो, दे हैव डिल्यूटेड यू. उन्होंने तुम्हें मिसलीड किया है. एंड यू ग्रम्बल अगेंस्ट फेट एंड यू आर कंप्लेन. ग्रम्बल मीन्स कंप्लेन, मेकिंग कंप्लेन्स, राइट? तुम क्या करते हो? तुम जो एक्शंस तुमने करी है, जो गलत काम तुमने किए हैं, उन्होंने तुम्हें डिविएट किया, उन्होंने तुम्हें डिल्यूट किया. यू नो, यू आर डूइंग इट, बट यू आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट योर फेट. तुम अपने तकदीर को कंप्लेन कर रहे हो. यू आर अगेंस्ट योर फेट, यू आर कंप्लेनिंग अबाउट योर फेट. तकदीर ऐसी है, मेरे तकदीर में ऐसा था. नो, एक्चुअली व्हाट हैव डिल्यूटेड यू इज योर मिसडीड्स. ओके, जो तुम कर रहे हो ना, उसी की वजह से ऐसा हो रहा है. स्टिल परस्यूइंग द हैकनीड वेज. तुम अभी भी परस्यू कर रहे हो, तुम अभी भी पीछा कर रहे हो. यू आर फॉलोइंग व्हाट? द हैकनीड वेज, ओल्ड फैशन्ड वेज. ओके, हैकनीड वेज मीन्स ओल्ड फैशन्ड वेज. यानी तुम अभी भी पुराने तरीकों पे चलते हो. तुम अभी भी उसी जमाने में हो. You are living in 21st century and you need to love every human being. Okay? If you do not do so, then there will be disorder, the chaos in the society, right? So, how can you ferry across? तुम असल में पुराने तरीकों पे अभी भी चल रहे हो. यू आर फॉलोइंग योर हैकनीड वेज. हाउ कैन यू फेरी अक्रॉस? तुम कैसे एक रिवर को क्रॉस करोगे? हाउ विल यू सक्सीड इन योर लाइफ? ओके, तुम कैसे कामयाब हो जाओगे व्हेन यू स्टिल आर योर फॉलोइंग योर हैकनीड वेज, द ओल्ड फैशन्ड वेज? कैसे तुम कामयाब होंगे? योर हार्ट रेस्टलेसली वाइब्रेटिंग. तुम्हारा जो दिल है ना, वो हमेशा वाइब्रेट कर रहा होता है. तुम हमेशा डिजायर्स के पीछे भागते हो, राइट? योर हार्ट रेस्टलेसली होता है ना, व्हेन यू आर इन अ स्टेट व्हेन यू हैव नो रिलीफ, यू आर रेस्टलेस. ठीक है, यू डोंट हैव पीस ऑफ माइंड. और तुम्हारा हार्ट है ना, वो वाइब्रेट कर रहा है. किसी छोटी चीज़ को देखेगा, योर हार्ट विल वाइब्रेट. ओके, इट विल क्रिएट अ विश. योर विजन क्लाउडेड बाय फैंटेसीज. तुम्हारी जो नज़र थी ना, तुम्हारा जो विजन था, उसको क्लाउड किया है. दैट इज क्लाउडेड बाय फैंटेसीज. असल में तुम फैंसी में अभी रह रहे हो. यू आर नॉट लिविंग द प्रैक्टिकल लाइफ. You are living an imaginary life. You are in the fantasy, right? So come to the real world. Okay, clear your vision. अपने नज़र को साफ करो, right? And see
the people around you living in your society who are from the below poverty line. Help them. Okay, live every moment of your life being alive, being real to yourself, to your people. Okay, don't fall in the fantasies, come to the real world. All this is a fanciful dream. तुम किस में रह रहे हो? एक fanciful dream में रह रहे हो तुम, एक ऐसा ड्रीम जो कि इमेजिनरी है. राइट, फैंसीफुल मीन्स इमेजिनरी. तुम ऐसी दुनिया में रह रहे हो जो रियल है ही नहीं. यू आर एक्चुअली यू आर हैविंग अ ड्रीम. नाउ वेक अप. नाउ अब्दुल अहद आजाद सेज द वेक अप, जागो. ओ मैन वेक अप, जागो. फ्रेंड्स एंड मेट्स हु शेयर योर वो like parts of your own heart. तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं, तुम्हारे ऐसे मेट्स हैं जिन्होंने तुम्हारे गम में, जिन्होंने तुम्हारे परेशानियों में तुम्हारा साथ दिया. लाइक पार्ट्स ऑफ योर ओन हार्ट. दे एक्टेड लाइक योर ओन पार्ट ऑफ हार्ट. ओके, दे वर योर. दे हेल्प्ड यू एट ईच एंड एवरी मोमेंट. दे हेल्प्ड यू एट एवरी स्टेप. ओके, दे एक्टेड लाइक योर ओन पार्ट ऑफ योर हार्ट. ओके, उन्होंने गम में तुम्हारा साथ दिया. हाउ कुड यू टेयर देयर हार्ट्स टू पीसेस? तुम कैसे उनके दिलों को पीसेस में करोगे? तुम कैसे उनका दिल तोड़ोगे? यू ब्लड थर्स्टी मैन, खून के प्यासे इंसान. तुम्हें जिन लोगों ने प्यार दिया, जिन लोगों ने तुम्हारी हेल्प की when you were in sad mood, when you were in trouble, those who helped you, how will you tear their hearts? तुम कैसे उनके दिल तोड़ोगे? How will you break their hearts? Okay, you have to act like the same. The way they helped you, you have to do the same to them. Right? Now, in your own garden, you cut the roots. तुमने क्या किया? तुमने अपने ही गार्डन में, अपने ही दुनिया में, अपने ही एक ऑर्चर्ड में तुमने रूट्स को काटा. तुमने क्या किया? तुमने you have cut the roots while watering twigs. शाखों को तुम पानी दे रहे हो, but you are you are cutting out the roots and you are giving water to the leaves. This is so ironical, this line, and that's why this line is the best line in this poem. And this is the Kashmiri proverb also. Okay, I have read out the Kashmiri version in front of you, so you can just revise the video and see the line. You know, आप अपने गार्डन में आपके पेड़ थे. ओके, दिस इज अ सिचुएशन. आपके पेड़ थे, आपने पेड़ों को तो रूट से निकाला, लेकिन फिर क्या करते हैं? आफ्टर कटिंग इट डाउन, यू आर गिविंग वाटर टू द ट्विग्स. आप पत्तों को क्या दे रहे हो? आप उनको पानी दे रहे हो. ओके, दिस इज नॉनसेंसिकल जॉब. व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली? आप रूट्स को निकाल रहे हो और पानी दे रहे हो किनको? पत्तों को. Okay, the first work you were supposed to do is just make sure that your root is safe, your root of the tree is safe. Then if you are watering the twigs, that will be fine. So the first duty is to protect the roots. That means जो इंसानों को इंसानियत दी गई थी, the feelings and emotions you have been given by God, preserve all of them. Right? You are known as a human being. You have humane quality. Right? आपको अल्लाह ने humane quality दी हुई है. You have feelings and emotions. Right? You have mercy. You have pity inside you. You help each other. तो वो हमारा root है. Okay? Feeling for someone else. That is our root. अगर वो ही नहीं है हमारे पास, तो फिर हम जो रिलेशनशिप्स बनाते हैं, फिर जो हम फ्रेंडशिप्स बनाते हैं, they are all baseless. Like a tree whose roots you have cut and you are giving water to the twigs. Right? So we have to be like humans. We have to be merciful. We have to help others. We have to show mercy and pity to the others. So this is all about the poem. Now, talking about the devices used in the poem, the first one is simile. This is a tool used by the poet in order to describe the situation, the statement very clearly. Literary devices help the author, help the writer or poet to say or tell his things clearly. Now, the first device is simile.
So it is basically comparison, as I have discussed it in many videos. It is a comparison between two things by using like or as. Okay, now see, as close to one another as the nail to the flush. This word has been used, so this is comparison. Here we see close to one another as to nail. यहाँ पे किसका कंपैरिजन किया गया है? जैसे नेल फ्लश के साथ चिमटा हुआ होता है ना, ऐसी हमारी इंसानों की रिलेशनशिप है. वी आर सो क्लोजली कनेक्टेड, just like a nail, right? So this is a comparison and we call it simile. Second one is alliteration. Alliteration is the coming of or occurrence of the same sound at the beginning of the words, right, which are closely connected. See the example: division, duality; division, disorder; vibrating, vision; while, w, watering; ransack, ravage. So these, if you look at the first letter of the words, you'll see these are the same words. So these are all known as alliteration. Now there is one more device used in the very first line of the poem, and I'll show you where exactly the device is. It is this line: you were the light of reason. इसमें पोएट जो ये कह रहा है इंसान को, you were the light of reason. तुम क्या थे? तुम अल्लाह ने you were the light. यहाँ पे पॉइंट नहीं कह रहा है कि you are like this. यहाँ पे कह रहा है डायरेक्ट कि तुम ऐसे हो. ठीक है, तो जब एक तो यहाँ पे see the this second line, you chose to be fire, oh man. Here, तो यहाँ पे भी बोला गया है इंसान को fire, यहाँ पे बोला है reason. So this device is known as, can you guess, metaphor. Okay, जिसे आप इस्तिआरा उर्दू में कहते हो. So these fire and reason are used as metaphors. Now again, this is a comparison. A man cannot be a fire, a man cannot be a reason, right? So these two are the metaphors used to show that the humans are given these two qualities. Humans have selected to be the fire, but he was actually given the power of reason. So with this, I hope you have understood the whole poem. If you are having any confusions regarding this poem, and this is the second last poem of your book of poetry section. In the coming session, we will be dealing with the last poem of the poetry section. So I hope this session is clear to all of you. If you have any queries or confusions, you can write in the comment box, and your queries will be appreciated. And I need one thing from your side, that is to give me thumbs up from your side, right? Subscribe the channel, like the videos. Thank you so much.